afternoon. Thank you very much for joining us here on Times Now. This is Times Now Live and I'm Hina Gambhir. The big story, viewers, that we have for you is coming from the Parliament. Winter session of Parliament is underway and we have seen fireworks, war of words on the issue of Dr. B.R. Ambedkar. Now, just before the Parliament session today, several members of Parliament from the INDIA bloc, including Congress leaders Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, staged a protest. They demanded an apology from Home Minister Amit Shah for his remarks yesterday, which they claimed insulted Dr. B.R. Ambedkar. The MPs gathered in front of the Makar Dwar of the Parliament holding posters of Dr. Ambedkar. Congress, DMK, RJD, Left, Aam Aadmi Party and some other parties in the INDIA bloc participated in this protest this morning. Now, after the Parliament's proceedings resumed for the day, Union Ministers Arjun Ram Meghwal in Lok Sabha and Kiran Rijiju in Rajya Sabha led the charge against the opposition, accusing them of attempting to target Home Minister Amit Shah. Listen in. ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी। And Congress netas up in arms, in fact, on this particular issue, declaring that insulting Dr. B.R. Ambedkar will not be tolerated. Congress President Mallikarjun Kharge has gone a step further, calling for the resignation of the Home Minister over his remarks. Listen in. जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए I demand his resignation. It's an insult on Baba Sahib Ambedkar. Mr. Amit Shah's server-worker mindset has come out, and he is unable to understand the word Ambedkar. He is getting angry with Ambedkar, which we will expose it that Mr. Amit Shah's thinking process is server-worker's mindset. I think the Union Home Minister spoke about Dr. B.R. Ambedkar in a very disparaging manner. It only shows that deep inside they have no respect for Dr. Ambedkar's position or the issues that Dr. Ambedkar were raising during his lifetime. And in protest of that, all India Alliance parties will be protesting outside Makar Dwar today. And there's some breaking news as well coming in at this point in time. Amid the showdown over Ambedkar legacy, Home Minister Amit Shah is chairing a crucial meeting with central ministers inside the Parliament. The union ministers, including JP Nadda, Piyush Goyal and Ashwini Vaishnav, are also present in this crucial meeting that is currently underway in the Parliament. That's the big news that we are breaking for you at this point in time. Remember, on the remarks, we saw a protest from the opposition and both houses of Parliament also got adjourned till 2 p.m. amid the protest. Let me go across to my colleague Amit Kumar joining us on the broadcast for more on this. Amit, आप हमें बताइए इस अहम बैठक के बारे में, क्योंकि ऑपोजिशन जो है की तरफ से काफी तीखे बयान आ रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए जब से उनकी वो स्पीच कल कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट के ऊपर हुई थी राज्यसभा में।
जी देखिए, निश्चित तौर पर पूरा विपक्ष जो है वो अमित शाह को घेरने की कोशिश में है। खड़गे ने, जो कि अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा भी मांग लिया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बाकायदा जो किरण रिजिजू हैं वो थे, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, वो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताने की कोशिश की कि कैसे अंबेडकर के नाम पर पॉलिटिक्स अभी भी कर रही है कांग्रेस, जबकि बीजेपी ने किस तरह से उनके लिए किया है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी बनानी है उसको लेकर अमित शाह के साथ बैठक हो रही है। जेपी नड्डा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल है, प्रहलाद जोशी है, अनिल बलूनी, अश्वनी वैष्णव जो कि अर्बन जो एनडी मिनिस्टर हैं। तो ये अमित शाह के यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी भी बन रही है कि मीडिया में जिस तरह से ये जो खबरें हैं इसको लेकर आगे कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, क्या उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, पार्टी के फोरम पे कैसे उसको काउंटर करना है। इसके अलावा स्ट्रेटेजी इस बात को लेकर भी चल रही है कि सदन के भीतर जो विपक्ष की तरफ से नेरेटिव सेट करने की जो कोशिश की जा रही है उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। तो अमित शाह शेयर कर रहे हैं उस अमित शाह के साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम मंत्री हैं, और बैठक चल रही है जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर ये जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसके लिए सरकार की और बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। Right, so we look forward to the outcome of this crucial meeting. Thank you, Amit, for the moment, for joining us with all of those details. Let me now go across to my colleague Niyamika as well, joining us on the broadcast for more on this particular story. Niyamika, this thing became a big issue in both Lok Sabha as well as Rajya Sabha in the morning when the proceedings for the day began. Both houses had to be adjourned till about 2 o'clock. But tell us a little bit about the kind of response we have got from union ministers. And here I'm talking about Arjun Ram Meghwal and Rijiju, who have in fact tried to suggest in response to what Congress party is saying that Congress party only talks about Ambedkar but does not respect him. Actions speak louder than words is something that they are emphasizing on. Well, indeed, as we have seen that how the attacks as well as the counter attacks are coming in from both the sides, both from BJP as well as the Congress party, because it was the Congress only who had started raising this concern since yesterday. Also, we have seen that various statements were coming in, and today morning, not just inside the parliament, but in fact outside the parliament also, the manner in which the India Bloc parties held a protest, because they are basically making this allegation that the Union Home Minister has insulted Dr. B.R. Ambedkar by his statement which he had given yesterday within the parliament, as they have said that this shows the mindset of the BJP, the manner in which he has insulted Dr. B.R. Ambedkar within the parliament. That is unacceptable, and that is the only reason why today a clear instruction has also been given on the part of the top leadership of the Congress party to all the Pradesh Congress committees to hold a protest march to the Raj Bhavans against this statement which has been given by the Union Home Minister, because the Congress party doesn't want to let it go, as they are saying. We have spoken to several of the MPs of the Congress party, and they are saying that this shows the Sangh mindset, the manner in which this statement is being given. As in fact, the Congress President Mallikarjun Kharge has also demanded the resignation of the Union Home Minister for making such kind of remarks within the Parliament. On the other side, the Congress Party's MP, Mr. Manikam Tagore, has also spoken over this, and he said that this shows the Savarkar mindset, the Savarkar ideology, which is being followed on the part of the BJP leaders, specifically the Union Home Minister. That is basically the Congress Party's motto, to expose it in front of the people of this country, and that is the reason why a strategy has already been formed. On the other side, the BJP is attacking the Congress Party for by saying that this is nothing but just the politics which the Congress Party is trying to do, because the actions are completely different of the Congress Party. They have never respected Dr. B.R. Ambedkar, whether it is about putting the portraits of Dr. B.R. Ambedkar within the offices of the Congress Party. They have never done that. In fact, they have never supported any award to Dr. B.R. Ambedkar. So that is clearly shows the mindset of the Congress Party, as they are doing nothing but just the politics out of this entire matter. All right, Niyamika, request you to stay on with us. Meanwhile, Bharatiya Janata Party leaders have also targeted Congress Party and its allies in the INDIA bloc, accusing them of disrespecting Dr. B.R. Ambedkar over the years. Several BJP netas have stated that Congress no longer has the right to question the BJP on matters related to Ambedkar, given their own history of neglecting his legacy. Listen in. जिसने अपने खानदान को तो सब पद्मश्री पद्म भूषण सब कुछ ले लिया, बाबा साहेब को नहीं दिया, स्टेचू तक नहीं लगाया,
बाबा साहेब को हराने का काम किया। अब वोट के खातिर घड़ियालू आंसू बहाने के लिए वही बात अमित शाह कह रहे थे कल सदन में। अब घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा कांग्रेस को। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है और निर्लज हो गया। देखो, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अगर कांग्रेस बात करेगी तो उसको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ डॉक्टर अंबेडकर का शुरू से कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया, न केवल उनका अपमान किया बल्कि उनकी सोच का अपमान किया, उनके संविधान का अपमान किया, उनकी सोच, संस्कार और संस्कृति का अपमान किया, ये किसी से छिपा नहीं है। जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का, आप देखें तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की सोच, डॉक्टर अंबेडकर की संस्कार, डॉक्टर अंबेडकर की जो संस्कृति है उसको सशक्त करने के लिए लगातार काम किया है। Meanwhile, let's also now listen into what exactly Home Minister Amit Shah had said, which has irked Congress party and its allies so much. मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। Let's now go across to my colleague Rishabh joining us on the broadcast for more on this. Rishabh, so as in fact said by Union Minister Kiren Rijiju earlier, opposition is very clear that Amit Shah will have to come on the floor of the House and apologize for his statement that he made on the floor of the House yesterday in Rajya Sabha. We spoke to a lot of opposition MPs on camera, off camera, and when we asked them that, whether what they think of this remark or that remark, their message is very clear. Nothing talking, nothing doing. We will only discuss on the statement of Amit Shah when it comes to the reference to Dr. B.R. Ambedkar that he made during his reply to the constitutional debate in Rajya Sabha. And that is something that the opposition is resounding, all of them, be it Samajwadi Party, be it Aam Aadmi Party, be it Congress, DMK, Shiv Sena, Uddhav Balasav Thackeray faction, or for that matter, NCP, Sharad Pawar faction, or for that matter, the northern parties or RJD and all of them, they are very clear that we do not want to discuss on any issue. The only issue that we want to discuss is, as per them, the disrespect toward Dr. B.R. Ambedkar that has been unleashed by Home Minister. And having said that, when BJP is saying that this is a excerpt of the whole speech and one should not just go by this sense again, Congress says that this is the operative part and they have they have opposition to this and they will not sit down
till Amit Shah comes to house and tenders an unconditional apology. You remember today there were a lot of discussions that were lined up in the parliament as well, but as we saw, the house did not function. Right. Clearly, opposition upping the ante on this particular issue. Thank you, Rishabh, for the moment for joining us with your inputs. Let me now go across to Mohit Bhatt. Mohit Bhatt, over to you. I believe you have a leader with you. Okay, we'll go across to Mohit in just a bit and get you another reaction as well.